Hello and welcome. This is your clinical dietitian and educator, and today we'll be covering BMI. What is BMI? BMI is the body mass index. BMI body mass index होता है. ये एक टूल है जिससे हम लोग एक इंडिविजुअल का वेट स्टेटस उसकी बॉडी का वेट स्टेटस चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. इसको हम लोग क्यूटिलेक्स इंडेक्स भी बोलते हैं. BMI कैसे निकालते हैं? BMI इक्वल्स टू द वेट in kgs and the height in meter square. Now, if we assume a person is having a weight of 68 kilograms and the height of 5.8 feet, then as we know that 1 feet equals to 0.3 meters, the BMI as per the calculation and the summation of the individual that we have assumed comes under the normal range of BMI. Now there is a point, how can others calculate and check what according to my BMI is, as there might be the variations in their height and weight. And I have given over here the weight status according to the BMI. वेट स्टेटस, अगर एक इंडिविजुअल अंडर वेट है तो उसका BMI रेंज लेस देन 18.5 होगा. अगर वो पर्सन नॉर्मल है तो उसका जो BMI होगा वो 18.5 टू 24.9 होगा. अगर वो पर्सन प्री ओबीज है तो उस इंडिविजुअल का BMI 25 to 29.9 रेंज में हो जाएगा. ऐसे ही देयर आर द ग्रेड्स फॉर द ओबेसिटी. इफ द पर्सन इज डीलिंग विद द ओबेसिटी ग्रेड 1, इफ द पर्सन इज डीलिंग विद द ओबेसिटी ग्रेड 2, if the person is dealing with the obesity grade 3rd, then there is a range for each and every obesity, what according to the BMI range the person is having. And then there is a one more point, that is the abdominal fat mass. What is abdominal fat mass? Abdominal fat mass is the increase in the number of the abdominal fat mass is the fatness to your abdomen. As to some patients, BMI is normal, but they have the abdominal obesity. By the abdominal obesity, there is a lot of problems happens, chronic diseases. That is the वहाँ पे उनको heart diseases होने के chances है, hypertension होने के chances है. अब हम इस abdominal fat mass को दो चीज़ों में categorize करते हैं. We categorize into two things. That is there is android obesity and the gynoid obesity. Android and gynoid obesity क्या होता है? Android obesity वो वाली ओबेसिटी है जो फैट हमारे अराउंड वेस्ट के होगा, हमारे एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन में जो फैट होगा उसको हम लोग एंड्रॉइड ओबेसिटी बोलते हैं. गाइनॉइड ओबेसिटी हम लोग बोलते हैं जो हमारा फैट राउंड द हिप एंड बटॉक्स अराउंड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं गाइनॉइड ओबेसिटी. एंड इसको लोअर ट्रंक फैटनेस भी बोला जाता है. अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वेट टू द हिप रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द वेस्ट सर्कमस्फेरेंस एंड वी टेक द हिप circumference. The waist to the hip ratio for the man, it should be 1.0, and for the female it should be 0.58. Thank you so much. It was all about the BMI and the calculations of the BMI, and further the abdominal fat mass, how we calculate the BMI, how the abdominal fat mass is categorized.